Hello student, again welcome back to my channel. I hope your preparation is at the peak and it is in the end of your end time. I hope that my video or my session will act as a boost in your preparation, and it is the last video of CPET question discussion, because your exam will be conducted on tomorrow. So let's start the remaining questions of CPET 2021 session. Question number 36. Assuming they all had the same number of carbon atom, which of the following has the maximum number of CH bond? क्वेश्चन ने देछि कि जो चारिटा ऑप्शन रही ता भितर कहा पाखरे मैक्सिमम नंबर ऑफ CH बॉन्ड रहुची. तुमे जानिच कि CH बॉन्ड रो मैक्सिमाइज हुए केतेबेले ना जेतेबेले सी सैचुरेटेड थाए बा ता पाखरे जदि सिंगल बॉन्ड थाए. ताहले या भितरु सिंगल बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड रहुची सैचुरेटेड फैट पाखरे. ताहले करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डायरेक्ट क्वेश्चन आछि वन लाइनर. Which of the following cofactor is essential for the activity of acetyl CoA carboxylase? ताले एसिटिल CoA कार्बोक्सिलेज रो एसेंशियल कोफैक्टर होची किए ना तुमरो बायोटिन. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 38 भी तुमरो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन अच्छी. आबजाइम कौन ना आबजाइम गुड़ाक तुमरो जो मानकर इम्यूनोलॉजी पेपर अच्छी से माने जानी थिबे, नहले भी जदि प्लस टू रे तुम्हें जानी थिबो तो आबजाइम होची दोज आर द एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालाइटिक एक्टिविटीज. ताहले ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. आमे एंजाइम रे कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विषय रे बहुत बार डिस्कस करिचे. आज भी मु तुमको एंड टाइम रे कहि दोची गोटे ग्राफ बने कि हमर Km वैल्यू एंड Vmax यार वैल्यू कौन हुए ना डिस्टर्ब हुए कौथिरे ना कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव रे कौन हुए ना Km रो वैल्यू इंक्रीज हुए, Vmax कांस्टेंट रहे. अनकॉम्पिटिटिव रे बोथ रो वैल्यू कौन हुए ना डिक्रीज हुए. नॉन कॉम्पिटिटिव रे Km कांस्टेंट रहे एंड Vmax डिक्रीज हुए. ताहले एठी क्वेश्चन पचारछि नॉन कॉम्पिटिटिव उपरे. नॉन कॉम्पिटिटिव रे कौन होउची ना फास्ट देला Km इंक्रीज होउची. आमे एठी कौन देखुचे ना Km कांस्टेंट रहउची. ताहले फर्स्ट टा भूल अछि. सेकंड Km डिक्रीज होउची ना Km तो कांस्टेंट रहउची. थर्ड रे Vmax इंक्रीज होउची. Vmax इंक्रीज होउनी, Vmax डिक्रीज होची. तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 40 को. क्वेश्चन नंबर 40 पचारछि. Which of the following compound is a positive allosteric regulator of the enzyme pyruvate carboxylase? तुम्हें मैंने जानिच कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन रे कौन हुए ना इट इज द व्हेन ए सब्सटेंसेस अटैच टू एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट. ताले
ये कौन करे ना तुमर एक्टिव साइट रे अटैच न है कि एंजाइम रा एडिशनल साइड रे अटैच्ड हुए आउ ये कहा को इंड्यूस करे ना एलोस्टेरिक रेगुलेटर तुमर इंड्यूस करे कहा को ना तुमर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को ये कौन करे ना तुमर इंड्यूस करे। ओके ताले एठी क्वेश्चन देछि कोन ना पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रो तुमर एलोस्टेरिक रेगुलेटर किए ना ये आंसर होची एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 P53 protein is associated with all of the following except P53 आमर ताको आमे कौन कहूचे ना ट्यूमर सप्रेशन बोली कहा जाए ट्यूमर सप्रेसिव प्रोटीन बोली कहा जाए आउ ये कौन इंड्यूस करे ना तुमर एपोप्टोसिस बा ताको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहा जाउची आउ इंड्यूस करे ट्रांसक्रिप्शन बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को P53 इंड्यूस करे नहीं। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हेन heterozygous black pig are intercrossed then what is the chance of the first two offspring being black। अच्छा एठे देखिबा कोन होउची ना हमें हेटेरोजाइगोट को हमें इंटरक्रॉस करिवा ताले आर रिजल्ट आसीबो यही आसीबो। क्वेश्चन देछि व्हाट इज द चांस ऑफ द फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग बीइंग ब्लैक ताले आमर फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग देछि आमर ब्लैक रो चांस केते होउची से डायरेक्ट पचारछि ता माने हमें मॉर्फोलॉजिकली ब्लैक देखिबा बा फिनोटाइपिकली ब्लैक आमर चांस होउची केते ना ये 3/4 हैला ताले से मागी जेहेतु टू ऑफस्प्रिंग ताहले हमें कौन करिबा ना 3/4 इंटू 3/4 9/16 याकू बाहर कले हमर केते आसीबो ना 9/16 को बाहर कले 56.25%। ताहले ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 43 को से दे देला कोन ना टोल लाइक रिसेप्टर बा TLRS प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनो डिफेंस बाय रिकॉग्नाइजिंग टोल लाइक रिसेप्टर हमर माइक्रोबायल कंपोनेंट्स ही रही थांती तो एठी माइक्रोबायल कंपोनेंट्स अछि ऑप्शन नंबर ए रे तो ऑप्शन नंबर ए होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 44 ये गुड़ाक भी तुमर सब आसी इम्यूनोलॉजी रो कौन देछि ना द मैक्रोफेज रिच मास फाउंड एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एन एडजुवेंट इज नोन एज। अच्छा या पूर्वरु हमको किछि टर्म जानिया को पड़िबो गोटे अछि मैक्रोफेज आ गोटे एडजुवेंट अछि। मैक्रोफेज कौन ना 2000 तब स्पेशलाइज्ड cell of WBC and they help in killing the foreign pathogen and make our body
डिजीज फ्री ओके देन आउ गोटे रहिला किए ना तुमर एडजुवेंट एडजुवेंट आछि तुमर एडजुवेयर वर्ड रो लैटिन वर्ड तार मीनिंग कौन ना टू हेल्प ओके ताले कहा को केमती हेल्प करची ना आमे जदि एको डेफिनेशन जानिबा ताले आ डेफिनेशन रे आमे एमती कुहा जाई परिबो कि एन एडजुवेंट इज ए सब्सटेंस दैट एनहांसेस the body's immune response to an antigen or increase the efficiency of a drug or treatment ओके ताले यार काम होची कोन ना हमर बॉडी रो इम्यून रेस्पॉन्स को ये कोन करिवो ना एनहांस कराए हला केमितिया ना सपोज हमर वैक्सीन नै जाउ जे वैक्सीन नेबा फल रे कोन होची ना हम बॉडी रे इम्यून सिस्टम टा कोन होची ना आहुरी सिए स्ट्रांगर हे जाउची हला ताहले एठी क्वेश्चन अछि द मैक्रोफेज रिच मास फाउंड एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एडजुवेंट माने सपोज हम गोटे वैक्सीन ऐड कलु से कोन को सेटरे कोन होची ना जते बेले हमर गोटे वैक्सीन ऐड करछे सेते बेले को आउ थरे कहूची the macrophage rich mass found at the site of injection of an adjuvant ता माने जोठी हमरो इंजेक्ट होची एडजुवेंट ता सेही एरिया टा जदी मैक्रोफेज रिच एरिया हेथिबो ताहले ताकू कोन कुहा जाय ना ताकू हमें कहू ग्रानुलोमा टर्म मन रखिबो ग्रानुलोमा देन मायोलोमा कोन ना मायोलोमा होची those are a cancer of plasma cells or a type of white blood cell in the bone marrow that produce antibody एमाने कौन करती ना हमरो बोन मैरो रे किछि सेल रही जंती जोड़ा को कि हमरो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करचंती ओके देन हमरो ऑप्शन नंबर सी रे देछि एडजुवेंट एक्टिवेटेड लिम्फोमा एडजुवेंट एक्टिवेटेड लिम्फोमा माने कोन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीनेशन in order to enhance the immune response of the body and activate the immune system and enhance the effectiveness of lymphoma treatment तो हमर जो lymphoma treatment हुए ना ताकू तार इफेक्टिवनेस टा कौन हबो ना एनहांस करबा को एडजुवेंट एक्टिवेटेड लिम्फोमा बोली को देन लिम्फोमा कौन ना लिम्फोमा होची दोज आर ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर दैट बिगिन्स इन द लिम्फोसाइट्स टा कोठी अछि ना डब्ल्यूबीसी रे हैला ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम व्हिच इज पार्ट ऑफ द इम्यूनो सिस्टम ये कौन करे ना इट कॉजेस abnormal cell to multiply and accumulate in lymph node often causing swelling हैला ताहले मायोलोमा कोठी अछि ना मायोलोमा अछि तुमरो बोन मैरो रे अछि हैला ये कौन करे ना एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए देन तुमरो लिम्फोमा कोठी ना तुमरो डब्ल्यूबीसी रे अछि बा लिम्फ नोड रे अछि हैला ये कौन करे ना ये तुमरो कौन करछि ना हैला तुमरो ब्लड कैंसर याकू कहा जाए हैला आउ हैला एडजुवेंट कौन ना इट इज द वैक्सीनेशन जोटा कि कौन करछि ना तुम आम बॉडी रो इम्यून रेस्पॉन्स को से एनहांस करछि ओके देन जिबा क्वेश्चन नंबर 45 मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ एमएससी जानिछ मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी सेल्स हैला यार मेजर वेरिएबिलिटी तक किए एमएससी कौन ना एमएससी इज ए सेट ऑफ जीन दैट एनकोड ऑल सेल सरफेस प्रोटीन एसेंशियल फॉर इम्यूनो सिस्टम टू रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन ताहले एगुड़ाक कौन होची ना एमाने गोटे सेट ऑफ जीन जो माने जोगुड़ाक कि रही जंती कोठी ना सेल सरफेस प्रोटीन रे
एमाने कौन सॉरी एमाने कौन करती ना सेल सरफेस प्रोटीन को एनकोड करती जोटा कि हेल्प करे कौन पाइका ना तुमर फॉरेन एंटीजेन को रिकॉग्नाइज करबा पाइका। ताले यार वेरिएबिलिटी होची कौन ना तुमर आमिनो टर्मिनस रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 एटा भी बहुत रिपीट हुए। द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा सलाइवा रे को एंटीबॉडी रही थाए ना IgA रही थाए। जमती लास्ट क्लास रे हमें डिस्कस करथिले द मोस्ट फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट एंटीबॉडी सेमती क्वेश्चन भी आसे व्हिच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द प्लासेंटा। तो यही पर्सन रो बहुत टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे। व्हिच एंटीबॉडी इज एलर्जी सेंसिटिविटी ओके यही टाइप रो क्वेश्चन बहुत आसी पारे। देन साइटोकाइन्स रो आसीची क्वेश्चन। लिखा है साइटोकाइन्स आर नॉट देखिवा साइटोकाइन्स कोटा नुहे। फास्ट देची एबल टू इंड्यूस इंक्रीज ब्लड वेसल परमिएबिलिटी ठीक लिखिला ये ब्लड वेसल रो परमिएबिलिटी को इंक्रीज कराए। देन एंटीजेन स्पेसिफिक तो नुहे। देखिबा या बाद आउ कौन कौन देची ऑप्शन नंबर सी रे देची मेड इन रेस्पॉन्स टू बैक्टीरियल एंटीजेन ये भी ठीक देची। ऑप्शन नंबर डी रे देची सिग्नल्स फ्रॉम वन सेल दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर सेल ये भी ठीक देची। ताहले एठी भूल ऑप्शन हबो ऑप्शन नंबर बी। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को आम कौन कहूचे ना आना फाइलैक्सिस बोली कहू। देन क्वेश्चन नंबर 49 इन मिस्थेनिया ग्राविस ब्लॉकिंग द एंटीबॉडीज बाइंड टू जानी था कि मिस्थेनिया ग्राविस को ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर बोली कहा जाए। ये कौन करची ना इट ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज बाइंड टू एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिजेनेटिक फैक्टर फॉर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। ताले हमें जदि कहबा एपिजेनेटिक फैक्टर पाखक पछरी जिबा फास्ट देखिबा एपिजेनेसिस कौन। एपिजेनेसिस को हमें केमती डिफाइन करू ना एपिजेनेसिस रेफर्स टू केमिकल स्विच दैट टर्न योर जीन ऑन और ऑफ विदाउट चेंजिंग योर डीएनए। ताहले डीएनए रो सीक्वेंस को चेंज न करिकी हमरो जीन रे आमर जीन ऑन किंबा ऑफ करने को कौन कह जाए ना एपिजेनेसिस बोली कह जाए। ताहले एपिजेनेटिक फैक्टर भी किछि रही ता भितर से गुड़ाक कौन ना आमर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी रही आउ किछि बिहेवियर भी रही। ओके जेमती कि आमर डाएट स्ट्रेस एक्सरसाइज टॉक्सिन हैला ये सबू एपिजेनेटिक फैक्टर रही। देन ताहले क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिजेनेटिक फैक्टर फॉर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट रो जीन एक्सप्रेशन पाइका कोटा दरकार हुए। ताहले जानिचे कि आमर डीएनए रे फास्ट मिथाइलेशन हेले ही आमर यूकैरियोट रे
जीन एक्सप्रेशन हुए ताहले इटी करेक्ट ऑप्शन हबो डीएनए मिथाइलेशन। Then question number 51, which of the following is a post-zygotic isolation mechanism in speciation? Speciation माने जानिछो कि formation of new species, ताले new species केमती formation होची इथिरे क्वेश्चन देछि which of the following is a post-zygotic isolation, ताले जाइगोट हेई सारिबा परे जेतेबेले isolation होची से मेकानिज्म टा कोन बा से देछि कोन ना पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन कोटा। बिहेवियरल आइसोलेशन हबनी, सीजनल आइसोलेशन भी हबनी, कहीं ना पोस्ट जाइगोटिक वंस दैट मीन्स कोन ना तुमरो जाइगोट फॉर्मेशन हेई जाउची ताहले फर्टिलाइजेशन फेल्योर हेले तो जाइगोट हबनी ना। देन हाइब्रिड स्टेरिलिटी, दैट मीन्स तुमरो दीटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म को भितर जेतेबेले तुमरो फर्टिलाइजेशन होउची तापरे कोन होउची ना जेतेबेले तुमरो हाइब्रिड गोटे प्रोड्यूस होउची से हाइब्रिड रो कोन ना तार रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ही तार न थाए हला ताकू कहा जाए हाइब्रिड स्टेरिलिटी बोली कहा जाए। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 52 कहूची द फिनोमिनन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द पॉपुलेशन दैट आर, आमे जानिचे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को फेवर करे स्मॉल एंड इनब्रीड पॉपुलेशन। डायरेक्ट आंसर देछि ऑप्शन नंबर ए रे। देन क्वेश्चन नंबर 53, द फर्स्ट वर्टिब्रेट appear in which of the following period of Paleozoic era? Paleozoic era रे कोथिरे फर्स्ट तुमरो वर्टिब्रेट अपीयर हेतिला ना ओडोफिशियन। देन चैपेरोन प्रोटीन हेल्प इन, चैपेरोन कोन ना फोल्डिंग प्रोटीन, ये हेल्प करे कोथिरे ना तुमरो प्रोटीन फोल्डिंग रे एंड स्टेबिलिटी रे। ताले एथिरे तुमरो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, काहेकि ना चैपेरोन हेल्प करे तुमरो प्रोटीन फोल्डिंग रे एंड स्टेबिलिटी रे। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55 कहूची द डेविएशन फ्रॉम द हार्डी-विनबर्ग assumption of infinitely large population size result in, देला कोन ना डेविएशन होची हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल रो। ताले हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कौन कहूची इन ए रैंडमली मेटिंग लार्ज पॉपुलेशन द जीन फ्रीक्वेंसी और द एलेलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इफ देयर इज नो म्यूटेशन माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ताले यार ऑपोजिट टा कौन हबो ना हमरो जेनेटिक ड्रिफ्ट हबो, काहेकि ना जेनेटिक ड्रिफ्ट रे कौन हुए ना एटा हुए कोथिरे ना गोटे स्मॉल पॉपुलेशन रे हेई थाए। ओके, ताले एटार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 56 को। In a population there is in equilibrium the proportion of individuals showing the dominant trait at a given locus have two allele, that is 84%. The frequency of recessive allele in the population is, ताले recessive allele रो frequency मागुची, ताले क्यों मागुची
सॉरी क्यू स्क्वायर नुहे फ्रिक्वेन्सी मागुची कहार ना रिसेसिव आलेली ताले क्यू केते से मागुची ताले एठी से देला पी स्क्वायर 84% ताहले क्यू स्क्वायर केते हबो आमे जानिचे पी प्लस क्यू रो होल स्क्वायर इक्वल टू 1 पी प्लस सॉरी एटा 0.84 ओके p प्लस q इक्वल टू 1 हैला ताले एठी q केते ना (0.16) ओके क्यू स्क्वायर है ताहले आमे क्यू बाहर करिबा केमतिया ना 0.16 रूट ओवर 0.4 ऑप्शन नंबर ए ये होची परसेंटेज Then question number 57, the folding of seed of cell, the migration of cell and cell death are the mechanism of एटारे कौन होची ना याको मॉर्फोजेनेसिस बोली हमर कहा जाए कहीं ना ये सेल जो सब चेंज होची दोज आर द फिनोटिपिकल चेंजेस सो याको हमें कहबा मॉर्फोजेनेसिस नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 58 को होची द प्रोसेस बाय व्हिच डेवलपिंग सेल्स अचीव देयर फंक्शनल मैच्योर आइडेंटिटी एज liver or muscle or nerve is known as differentiation कहीं ना आमर जिते बड़े सेल differentiation कौन ना it is the ability of a cell to perform a specialized function ताहले फास्ट जिते बड़े आमर सेल मल्टीप्लाई हुए तापर से सेल गुड़ाक इच सेल कौन करते ना डिफरेंशिएट हुए डिफरेंशिएट टू दैट स्पेसिफिक फंक्शन ताहले सेल आकुमुलेटेड हो सारिया परे किछि सेल डिफरेंशिएट हुए कौथि को ना लिवर को किछि हुए कौन ना स्टोमाक को किछि नर्व सेल को ताहले से माने जो पर्टिकुलर फंक्शन को बा स्पेशलाइज्ड फंक्शन को जो से माने मॉडिफाई हुए ताकू कहा जाय तुमरो डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following cell organelle actively participate in animal apoptosis रे को सेल ऑर्गेनेल टा पार्टिसिपेट करे ना तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करे देन क्वेश्चन नंबर 60 A species facing an extremely high risk of extinction in the immediate future is known as ताले जदि हमर extremely high risk रहुची extinction न ताकू हमें कहबा कोन ना endangered species then question number 61 Which of the following zones in a lake suffer from lack of light and therefore limited photosynthesis is able to take place? ताहले lack of light माने तार लास्ट पार्ट को हमें कौन कहूचे ना
प्रोफाउंडाल जोन बोली कहूचे। Then question number 62. In which year Wildlife Protection Act was implemented? Wildlife Protection Act ता को year रे implement हेइथिला ना 1972। Then the part of the brain that has been shown to function like a biological clock. मु कहिची ए क्वेश्चन टा हमर बहुत बार हमें डिस्कस करिचे हला बायोलॉजिकल क्लॉक जो रहिची को रेगुलेट करे एससीएन बा सुप्राकाइमास्टिक न्यूक्लियस। देखो सुप्राकाइमास्टिक न्यूक्लियस कोठी अछि ना ऑप्शन नंबर बी रे। Then which hormone is secreted by placenta? Placenta को हार्मोन सिक्रेट करे ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कहीं ना देखो इथि ग्रोथ हार्मोन किए सिक्रेट करछि ना पिट्यूटरी एला एससीटीएच ये भी पिट्यूटरी। गैस्ट्रिन टा होची कोन ना ये एंजाइम सिक्रेट करछि किए ना तुमरो पैरिएटल सेल। ओके देन क्वेश्चन नंबर 65 को जिबा। 65 पचरछि आइडेंटिफाई फिश ग्रुप व्हिच एक्सक्रिएट यूरिया एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट हैला। ताहले यूरिया किए हला तुमरो एक्सक्रिएट करछि ना मने रखिबो यूरिया एक्सक्रिएट करे तुमरो कार्टिलाजिनस फिश बा ताकू कहा जाए कौन ना इलास्मो ब्रांच फिश। देन क्वेश्चन नंबर 66 पचरछि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक टा हमरो यूज करा जाए बेसिकली हमरो कोथिरे ना फ्रेश वाटर फिश रे आ एटा कोथि पई का ना पीसी कल्चर पई का। ओके ताहले फर्स्ट ऑप्शन टा करेक्ट हबो दैट इज कल्चर फिशरी। ओके देन क्वेश्चन नंबर 67 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड होची तुमरो किए ना प्रोलाइन काहे ना आधरे इम्यूनो ग्रुप रहिता है। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 68 को। 68 पचरछि प्रोटीन मे बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाय। प्रोटीन टा साइज बाय जेते बेले सेपरेट हुए ताकू कहा जाए कोन ना मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। Then question number 69 all of the enzyme of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except सबुड़ाक आमर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रही कहीं टीसीए होची माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही सी होता है ताहले कोटा ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रही न था। रही न था होची तुमरो ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज। Then question number 72b a cloning vector plasmid does not require। plasmid कौन ना it is the small circular extra chromosomal DNA हैला एटा कोथिरे हेल्प हुए ना तुमरो जेनेटिक इंजीनियरिंग रे हेल्प हुए। ओके आउ ये कौन करे ना ये रिप्लिकेशन रे हेल्प करे ताहले टू बी ए क्लोनिंग वेक्टर ए प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर ताहले
एन ओरिजिन फॉर रिप्लिकेशन ना यार ये जेहेतु रिप्लिकेशन रे हेल्प करे ये निजे भी जेहेतु सेल्फ रिप्लिकेटेड से लगी तार ओरिजिन गोटे दरकार तो फास्ट ठीक अच्छी सेकेंड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर हाँ यार गोटे फंक्शन होची ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देन इट हैज ए रेस्ट्रिक्शन साइट ये भी ठीक अच्छी टू हैव ए हाई कॉपी नंबर ना यार हाई कॉपी नंबर दरकार है न थाए ताहले ऑप्शन डी टा होची करेक्ट आंसर एतिकी थिला तुमरो 2021 रो सीपेट जूलॉजी रो क्वेश्चन आंसर होप ए क्वेश्चन गुड़ाक तुमको बुझीबाकू हेल्प हबो याकू एनालाइज करके आंसर डिराइव करबा रे तुमको हेल्प मिलिबो काली तुम मानकर सीपेट एग्जाम जूलॉजी रो अछि होप समस्ते भल करिवो आउ बेसी पैनिक हेबनी जेतिकी पढ़ीच जहाँ पढ़ीच बस ताकू ही एनालाइज करिकी आउ काम माइंड रे फोकस होइकी क्वेश्चन रो आंसर करिवो जदि सेई टाइम रे पैनिक हेइ जिवो कि हला तुमरो एंजाइटी लेवल को बढ़ेई दबो ताहले आसुथिबा क्वेश्चन रो आंसर भी भूल हेइ जिवो सो जेतिकी आसुची आमे सेतिकी ठीक करिबा पैनिक हेइकी ताकू भूल करिबानी एतिकी मने रखिकी क्वेश्चन रो आंसर दबो एंड एबे तुमरो पैटर्न हो जाइए एमती कि तुम्हें जेतिकी पढ़ीच 3 वर्ष भितर प्रत्येक सेक्शन रो इक्वल अमाउंट रो क्वेश्चन आसुची ता बाद जार जहाँ डीएससी पेपर थिबो ता देहरु भी टिके प्रिपेयर होइकी जाइथिबो काहेकि ना आमे देखिलु कि एगुड़ाक तो बेसी तुमर इम्यूनोलॉजी रू आसुची किंतु जेतेबेले आमे 24-25 रो क्वेश्चन करितिलु सेतेबेले को डीएससी पेपर प्रायतः सब डीएससी पेपर गोटे दुईटा अल्प क्वेश्चन आसुची तो कही हेबनी एथरक भी केमिति आसीबो इधर माने 2021-22 भलिया इम्यूनोलॉजी कि तुमर बायोटेक्नोलॉजी रू बेसी आनीदेब कि तुमर रिसेंट क्वेश्चन जमती 2025-24 रू जमती आसुथिला कि अल्प अल्प क्वेश्चन गोटे दुईटा क्वेश्चन आनिबो तो आमे जितिकी आमर कोर कॉन्सेप्ट अच्छी कोर टॉपिक अच्छी ता धेरे मास्टरी फास्ट आनिबा कि जहाँ क्वेश्चन आसीबो आमे जेमती ताकू काम माइंड रे अटेंड करिबा एंड लास्ट रे एतिकी कहबी कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।